हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंदर पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन और सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन, एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द थ्योरम्स बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। तो आज बात करेंगे हम पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। इसको सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फंक्शन ft, a function ft is said to be piecewise continuous function, piecewise continuous function in closed interval t belongs to closed interval AB if it is defined on that interval and is such that the interval can be subdivided into a finite number of intervals, and in each of which intervals function ft is continuous. Function ft is continuous. ft is continuous. ft is continuous and has finite right hand and left hand limits. So this is the definition of piecewise continuous function. कोई भी फंक्शन जिसको हम पीस वाइज कंटिन्यूस कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, इफ it on that interval and such that the interval can be subdivided into the finite number of intervals, and in each of which intervals function ft is continuous and has finite right hand and left hand limits. So we can say that this is a piecewise continuous function. चलिए हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन। तो इस पर बेस्ड एक थ्योरम है जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ एफ टी इज ए फंक्शन, इफ एफ टी इज ए फंक्शन which is piecewise continuous
which is piecewise continuous on every finite interval in the range t is greater than equal to 0 and satisfies the condition ft mod of ft is less than equal to m of e to the power at for all t is greater than equal to 0, and for some constants a and m, then the Laplace transform of ft exists for all p greater than a. So this is the statement of this theorem. If ft is a function which is piecewise continuous, मान लीजिए ft कोई फंक्शन है जो piecewise continuous है on every finite interval on the range t is greater than equal to 0 के लिए, and satisfies the condition of mod ft is less than equal to m e to the power at for all t is greater than equal to 0, and for some constants a and m, then the Laplace transform of ft exists for all p is greater than a. चलिए हम इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. इसके प्रूफ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. We know that by the definition of Laplace transform, Laplace transform of ft is equal to integral 0 to infinite e to the power minus pt ft dt, and this is equal to, this one is integral 0 to t0 e to the power minus pt ft dt plus integral t0 to infinite e to the power minus pt ft dt. So here we are given the equation number 1, and this integral we change from 0 to infinite like that, 0 to infinite, and we take another point t0. So this is 0 to t0 and t0 to infinite. So this is called the piecewise. So the integral integral 0 to t0 e to the power minus pt ft dt exists since ft is piecewise continuous. ft is
piecewise continuous. On every finite interval t is belongs to closed interval 0 comma t0. So I'll again describe this. So we know that by the definition of Laplace transform की जो definition होती है उसको यूज़ किया है. Laplace of ft is equal to integral 0 to infinite e to the power minus pt ft dt. अब इसको पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन के लिए अलग अलग तोड़ा हुआ है. 0 से इन्फाइनाइट को यहाँ पर ब्रेक किया गया है. तो 0 से यहाँ पर t0 के लिए किया गया है, 0 to t0 एंड t0 to इन्फाइनाइट. फंक्शन सेम है e to the power minus pt ft dt. यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना हुआ है. एंड द इंटीग्रल ऑफ 0 to t0, ये वाला फर्स्ट वाला इंटीग्रल ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एफ टी आपका पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है. एवरी फाइनाइट इंटरवल टी बिलोंग्स टू 0 to t0, क्लोज्ड इंटरवल 0 to t0. चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे मॉड ऑफ इंटीग्रल t0 to इन्फाइनाइट e to the power minus pt ft dt. तो इसके बाद हमने इंटीग्रल को आउटसाइड किया हुआ है. सो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ e to the power minus pt ft dt. So this is less than equal to integral t0 to infinite, this is t0 not 0, this is t0 to infinite e to the power minus pt m e to the power at, because this is given since mod of ft is less than equal to m e to the power at. So this is given in statement of the theorem. So this is equal to integral t0 to infinite, m is the constant value, so we will take here e to the power, here e to the power minus pt and e to the power at. If base is same then power is add. So this is minus of p minus a and t is common dt. So this is equal to m is constant taken the outside of the integral. So m integral t0 to infinite e to the power minus of p minus a t dt. So given this is equation number 2. So this is equal to m. If you doing the integral of e to the power minus p minus at, so this becomes e to the power minus of p minus a t upon minus of p minus a, coefficient of t, and limiting values t0 to infinite. So after putting the upper and lower limit, so this becomes m of e to the power minus infinite upon minus of p minus a, and minus minus plus because here is also minus. So upper limit minus lower limit, so this is e to the power minus of p minus a into t0 upon p minus a. So this is m. E to the power in minus infinite is 0, so this wholly becomes 0, so this is 0 plus e to the power minus p minus a t0 upon p minus a. चलिए आगे बात करते हैं इसके. सो दिस इज इक्वल टू
m of e to the power minus p minus a t0 upon p minus a, where p is greater than a. So this implies that the integral value of t0 to infinite e to the power minus pt ft dt is less than equal to m into e to the power minus p minus a t0 upon p minus a, where p is greater than a. But this m into e to the power minus p minus a t0 upon p minus a can be made as small as this m e to the power minus p minus a t0 p minus a can be made as a small v taking to sufficient large. V taking to sufficiently large. Thus from the above equation, Laplace transform of ft exists for all p is greater than a. So hope you understand well this theorem. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.